Hello, very good evening to all of you. So today I am going to describe the chapter of the slope and deflections of the beams. So this is one of the significant chapter in the strength of material and analysis of structures. So in our early classes I have explained about the stresses, that was bending stresses and shear stresses. So for the design of a structure or for the analysis of structures, there are two things. One is strength and another is stiffness. So strength take care about the whether the beam can carry the load, design load, or also not. We have to ensure it. The stresses are within the permissible limits, and in addition to this, we also have to check whether the deflections produced are within the prescribed permissible limit or not. So deflection is also required to be checked, because excessive deflections will create another secondary stresses as well as some cracks, and appearance of the structure also get disturbed. So deflection is also required to be checked to ensure that it is within the permissible limits. So today I am going to explain about the deflections. So there are four methods of deflections. One is double integration method, another is moment area method, also known as Moore method. Then third is strain energy method. Fourth is conjugate beam method. So there are four methods through by which we can determine the slope and deflection of a beam or a cantilever at any point. So today I am going to explain about the double integration method. So every method has its own limitations. Somewhere one method is suitable, then another method is also stable at some other situations. So all the method we can apply dependent upon the location of the point where we want to know the deflection. So the knowledge of all the four methods are necessary. So this is a double integration method. There are two criteria for designing a beam. One is strength aspect and another is strength aspect and another is stiffness aspect. The strength, that is the first criteria that deal with the resistance against the bending and shear stresses that I have explained in my earlier lectures. And the second aspect is the deflection criteria that deal with the deflection that should be within the permissible limits. So this deflection criteria relates to stiffness. So the stiffness deal with the deflection. जितना ज़्यादा structure stiff होगा उतना deflection कम होगा. So for the analysis of statically indeterminate beams such as propped cantilever जैसे है and continuous beam, the study of deflection is required. The deflection is also required to check whether it is within the permissible limit or not. For the design purposes, हम बीम का डिजाइन करते हैं, स्लैब का डिजाइन करते हैं, so we have to see that
deflection is within the tolerable limit. So what are the methods of determining the deflection of a beam? One is double integration method, the method which I will explain today, that uses the equation of deflection curve like this. This is my deflection curve. So this is the function of x. So this method utilizes the equation of this deflection curve. Second is moment area method, also known as Moore's method, that utilizes the area of the bending moment to find the rotation, that is slope, and deflection at a point of a beam. And third is strain energy method, that consider the strain energy due to bending. And last is conjugate beam method, that is the method of elastic weights, and it is useful for simply supported beam. Can also be applied in continuous or simply fixed beam. So these are the four methods by which we can determine the deflection or rotation of a point. So today I am illustrating the double integration method. Suppose this is a simply supported beam. And it will deflect like this. So I am using this deflection curve to utilize it in order to find the deflection and slope at a point. So this is my deflected shape of the curve. So in case of pure bending like this, it will deflect like this. So in this case, the radius of curvature is constant, but that is not the case when bending moment varies, because in this case the bending moment is constant. So the radius of curvature, as we know, m upon I is equal to E upon R is equal to F upon Y. This is my flexure formula. So I is constant and E is also constant. So this 1 upon R is equal to M upon EI. So this is my constant stiffness, and as M varies, the radius of curvature also varies. So in case of pure bending, the R means 1 upon R curvature, that remains constant. But in this case, as the bending moment varies, the radius of curvature is also varies. So for that, so this is my formula in case of pure bending. 1 upon R is equal to M upon EI. However, when the beam is not subjected to pure bending couple, as is generally the case, the radius of curvature is not constant, but it varies from point to point. So I am taking this deflection curve. So this is my deflection curve. These are two ends, A and B. Suppose I had taken 2 points at a very, this is M and this is N, having a very small distance of dx. This is my dx at a distance of x from this spot. From this spot at a distance of x, I have taken M. This is my M point on the deflection curve, and another
further at a distance of dx. This is my another point. This is n. So I am utilizing deflection portion of this curve here. So suppose this is very less, very small length ds. So in this particular stretch we can say my radius of curvature is constant, is very small, so r is constant. So by drawing the tangent at these points, normal to the tangent, one tangent is this, so this is my radius of curvature, and this is the theta. So the coordinate of this point is, this coordinates of this point is x and y, and this coordinate of this point n is x plus dx, and this is further y plus dy. This is dy. So this is y plus dy. So these are the coordinates of this n, m and n. And there is a one tangent which I will draw at this point m. Another tangent I will draw at n. So the angle between the tangent is equal to angle between the normal. Suppose if this is theta, this will also be d theta. This is my theta, and this is change in rotation. So this angle is theta. Tangent of this will make a angle of theta with the horizontal, and x, this is my x axis. So as x moves, and deflection downward is positive, and this rotation, if it is clockwise, then also I will take it positive. So sorry, the theta is not, because this theta is the angle with the tangent of this. This is my deflection curve, and this is small pq. I drawn one tangent. This tangent, which is mt1, making an angle of theta with this x axis. Another tangent which I draw here, that after its extension make an angle of theta plus d theta. This is a change in theta, because this is my d theta. Obviously angle between the normal is equal to angle between the tangents. So this will also be d theta, and this will be theta. So this will be theta plus d theta. It may be plus or minus. So this downward deflection, if the deflection is downward, I will take it positive. If my slope, this is clockwise, I will take it positive, and the movement is from left to right, x. So here this d theta, this is my length ds. So this length of the arc ds is equal to ds upon this r is equal to this length upon this r is equal to d theta. So d theta is equal to this upon r. So I can say 1 upon r is equal to ds upon d theta. And my ds, this is ds. So I can take it like this, ds. My this much length
this is dx and this is dy. So this is dx and this is dy. So this ds, this will be dx square plus dy square root. So I can say ds is equal to this one, and I can also take dx out of here. So ds will be dx into 1 plus dy upon dx square. So this is my 1 upon r is equal to d theta upon ds. And when the bending moment is in equation is produced as here, the bending is sagging, this will deflect like this. So it means it's a point of curvature is on the upper side and concavity is upward, means it is in case of sagging moment. So when bending moment in equation produces concavity sagging, the curvature is positive when the center of curvature is above the curve. For such a case, the angle theta decreases as x increases. Here as my x increases from this point, the angle of rotation, which was this one, if I draw a tangent here, then it will be further. So as I move from here to here, my angle of this theta will decrease, means this will be negative. So as x increases, my d theta upon d theta will decrease. So there is a minus sign. So I can say 1 upon r is equal to minus d theta upon dx. So ds, as I explained, is equal to dx square plus dy square. So dx I have taken out from here, so it will be this one, and also this angle is, if this is theta, then this angle is also theta. This is dx, this is dy. So I can say this tangent theta is equal to dy upon dx. So differentiate both the side. This will be sec square theta into d theta is equal to d square y upon into second derivative of dy upon dx into dx. So sec square theta is equal to 1 plus tangent square theta, d theta is equal to this one. And if I put the value of tan theta here, it will be 1 plus dy upon dx square d theta is equal to d square y upon dx square into dx. And this d theta upon dx will become d square y upon dx square upon this one. This will become this one, and as I know, 1 upon r is equal to minus d theta upon ds. So after putting the value here, 1 upon r is equal to minus d theta. So d theta is this one. So this is the value of the d theta which I have put here, and ds is equal to this one. ds is equal to this one. So after taking dx out, it will be like this. So if I put the value of ds here, so this is the value of ds.
Now this dx and dx will cancel each other, and in the denominator it will be 1 plus dy upon dx square raised to the power 1 by 2 and plus 1, 3 by 2, and on the numerator it will be second derivative of y with respect to x. But 1 upon r, as we know, 1 upon r is equal to m upon ei, as m upon I is equal to e upon r is equal to f upon y. So this 1 upon r will be m upon ei. So 1 upon r, if I put m upon I in place of 1 upon r, with m is the bending moment is this, so my 1 upon r is equal to m upon I will become this one. So now if I take ei here, it will be ei into second derivative of y with respect to x, and this will be here minus m into this one. As dy upon dx, this slope dy upon dx, this is dx, this is dx, then this is dy. So it is small, this slope is small, they are very close to each other. What does it mean? Its square will be negligible. The slope of the tangent is extremely small, so its square of dy upon dx square will be still small, so we can neglect that. So this portion I can neglect, so it will be nearly equal to 1 because I can neglect it. So 1 plus 0, so it means this value will become minus m ei into second derivative of y with respect to x square is equal to minus m. This is my basic differential equation for the deflected shape of the beam. So this is my differential equation, जो this is for the deflection curve है. This is that. Now d square upon dy second derivative y with respect to x, I can write it like this: dy upon dx का second derivative I can say, and this dy upon dx is equal to d theta. This dy upon dx is equal to d theta. This is theta, this is ds, this is dx, this is dy, so this is theta. So dy upon dx is equal to this tangent theta, or I can say theta. This is very small. So dy upon dx, I can put theta here, so it will be d theta upon dx is equal to this dy upon dx square is equal to minus upon ei. So I can also write in this form. So sign convention is, this is a finally equation of deflection curve, and sign convention is this: when x is positive, when we measure towards right like this, so x is measured from this origin, so x as it moves from left to right, we take it x positive. If the deflection this y is downward, it means it is positive. When theta, this angle of rotation theta, suppose if I draw a tangent here, this angle, so as I move from here, my this theta will decrease, and when this theta, if it is clockwise, if the rotation is, if my rotation is clockwise like this, so earlier this was my position of the beam, and then after rotation it will be, so this is my clockwise rotation, so that is positive. M is positive when sagging. If my bending moment is like this, so it is, so concavity is on the upward side, so this is sagging, and sagging we take positive.
double integration method. This is my basic differential equation, as I proved it, ei into second derivative of y with respect to x square is equal to minus m, where this m is positive. Here I take it m as a sagging moment. Sagging means positive. This, in this equation, this m is this m. This is sagging moment. I have taken it as a sagging moment, positive. So integrating, if I integrate this equation, it will be ei into derivative y with respect to x is equal to ei. This is my theta, dy upon dx is equal to theta. So theta means slope, rotation. That will be equal to integration of this m. If I integrate it further, then it will becomes ei into y, and there is a double integration of this m. So this is my slope equation, and this is for finding the deflection. So these are the two equations. One is for slope, another is for deflections. So it means integrating the basic differential equation, this one, if I integrate it first, it will give slope at a point. If I integrate twice, it will give deflections, this I. So there are different cases, and to different cases I am going to illustrate the concept of this differential equations. Suppose this is my cantilever and there is a UDL throughout its span, and I have to find out a rotation and deflection here. So after deflection, it will be like this. So this is my deflected shape. So if I have to find out the deflection of the free end, this is my deflection YB, means deflection at this point B, and rotation at this point. So I can use this differential equation. So if I draw a tangent, this will make this angle. This is the rotation, means theta at B, or I can say I at B. This is my slope, and this YB is equal to deflection at B. So for this, suppose if I consider this section X, which is at a distance of X from here, this, suppose if I have to find a deflection at this point, so which is at a distance of X from here, so obviously this will be this L minus X. So my differential equation is EI second derivative with respect to X is equal to minus M. So this will be minus, and M will be bending moment at here. So this M is sagging, this is sagging, this minus is outside, this M is sagging here. So is as X point, at this X point, the bending moment is W into this much length. If I start from here, square by 2, this will be my bending moment here, and this will be hogging in nature. So this will be hogging. So my convexity is on the upper side, this hogging. So if it is hogging, it means it will be minus WL minus X square by 2. So this will be moment here. So this minus and minus will be plus. So this is my equation of deflection, differential equation. So now if I integrate it once, it will be EI into dy upon dx is equal to WL minus X cube upon 3, which will become 6, and the coefficient of minus X is equal to minus plus C1.
So at x is equal to 0, at this end, since the slope is 0, so due to fixed t, my slope is theta a, or slope at a is equal to 0. So at x is equal to 0, my this dy upon dx is equal to 0. So if I put it 0, it will become minus w l minus 0 cube upon 6. So my c1 will become plus w l cube upon 6. This is the coefficient c1, value of the coefficient c1. If I put the value of coefficient c1 here in this equation, so it will become ei into dy upon dx is equal to minus wl minus x cube upon 6 plus this is. So this is the slope equation. By this equation I can find slope at any point x. मैं इस x पॉइंट पे स्लोप निकाल सकता हूँ with the help of this equation. Now if I integrate this equation further, it will be ei integration of this and integration of this one. So integration of this one will become ei into y, and this one w by 6 l minus x l minus x is to the power 4 upon 4, and the coefficient this minus plus wl cube upon 6 into x plus coefficient c2. So further this will be positive. So this will become this one. Six into 4 is equal to 24. So this I will get it. So this is my for deflection. So when x is equal to 0, the y is 0. Means when this x is 0 here, my deflection is also 0. Means y is also 0. So at x is equal to 0, my deflection y, which is this one, y is yb here, but y is 0 here. So at x is equal to 0, so this y is also 0. So this will become 0 is equal to w l 4 upon 24 plus this will be 0 plus c2. So c2 will be minus wl4 by 24. So if I put this value of c2 here, I will get this equation ei into y is equal to wl minus x raised to the power 4 upon 24 plus wl cube upon 6 into x minus wl4 upon 24. This is my deflection at any point x. This will give deflection, and this was my slope equation. So these two equations will help us to know the deflection as well as rotation at any point x, which is as a distance of x from this. So इस x point पे slope this and this deflection y I can find out. Suppose if I have to find a deflection at here, or I can say rotation at here. So for that x will become this much, means x will become L. If I want to know the deflection and rotation at this B point, I will put the value of x is equal to L in my slope and deflection equation. So at a fixed end x is equal to 0, the slope is at the fixed end when x is equal to 0, this is my slope which is 0. Even if I put the value of x is equal to 0 in the equation, so I will get wl cube upon 6 minus and plus, it will become 0, which is obviously the case. At the free end when x is equal to L, my slope which is IB, this is the slope at here, this is with this theta b, or I can say IB. This will be when I put the value of x is equal to L
here. So if I put the x value of xl here, it will be 0, l minus l. So I will get plus wl cube upon 6. So ei into this dy upon dx, which will be ib, I can say slope at b, will become plus wl cube upon 6. So this ib or theta b, I can say, will become wl cube upon 6 ei. So this will be my slope at here. So this slope will become equal to wl cube upon 6 ei. Similarly, if I know the deflection at B point, so I will put the value of x is equal to L in my this equation. This will give deflection at B. Suppose if I put x value L here, so I will get EI into YB is equal to, this terms will be 0. When I put x is equal to L here, it will be 0 plus wl cube upon 6 into x is equal to L minus wl4 upon 24. So this will be 24 wl4, this will be 4 minus 1, so this will be 3 upon 24 wl4. So it will be wl4 upon 8. So this ei yb is equal to wl raised to the power 4 upon 8. So obviously yb will be wl raised to the power 4 upon ei. So this will be my equation for deflection at B. At this point, this IB will be wl4 upon 8 ei. So this is the equation of deflections, value of the deflection at B. So these value will be required to remember frequently. So it is advisable to remember it regularly, and because frequently they will be required. So suppose, so what we have concluded here, if I have a cantilever and there is a UDL, so the slope at this point B, this theta B or IB, I can say, this will be WL raised to the power 3 upon 6i, and if the deflection, this deflection YB will be WL4 upon 8 ei. So this is for deflection and this is for slope. So if there is a cantilever having a UDL throughout its span, then slope at this free end will be WL cube upon 6 ei, and deflection at this free end will be WL4 upon 8 ei. This is my formula. Second case is, suppose there is a UDL but it is not throughout. So it is for a length of L1 from this fixed end. This is a cantilever and my UDL is for this much length. This is A, this is B. So my UDL is only for this much portion, and I have to find out the deflection YB and slope here. So in this case, the deflection will be like this. So for this UDL portion, this deflected shape will be curved, and for the remaining length, since no load is acting here, so after reaching this point, my slope will become constant. So it will be a straight line, it will be linear. So it means the slope at this point, tangent at this point, which will make an angle of, this is IC. Slope at this point, this will be constant because this is a straight line.
So if this is IC, this will be IC. So my slope will be continuous. So and suppose this is the deflection at this YC, is the deflection here. So I can find out the deflection at YB. So my deflection at YB at this free end will be equal to this YC will this YC, if this is YC, it will be constant. So this will be YC plus YC, and this much portion will be equal to, this is the slope into this much. So this, suppose this is Y1, so this side Y1 upon this much length, which is L minus L1. This is L minus L1. So this portion is L minus L1. So this divided by this side will be this slope, which is slope. This will be YC. So Y1 will be equal to, this Y1 will be equal to slope at C into L minus L1. So this is my Y1, this one. So if I multiplied this slope here, which is constant from this portion for this portion, if I multiply this slope to this length, this will give Y1. And if I add this value with this IC, I will get YB, which is final deflection at this free end. So my total deflection YB here will be YC, which is constant here, plus this much portion. This is equal to slope into this much length. So this is how we can analyze this structure. So my slope IC and IB, this is constant. So my slope here, my slope, this is equal to, this IC will be equal to, as we know, W. This is another case. This slope here is equal to, I can take, is the free end of the cantilever for getting this much portion. So this YC is equal to WL1 4 upon 8EI, and slope here is equal to WL1 cube upon 6EI. So these are my values I have explained in my previous case. So this value YB will be equal to this YC, which is this one, WL1 4 upon 8EI, plus slope of this one, which is this, into this much length. So with this, I can find the total deflection YB here. So there is another case. In this case, my UDL is not from the fixed end, it is from the free end. From free end, this B to C. So this is a UDL for this much portion, and I have to find the deflection at this end. So how can I analyze this cantilever beam? In this portion, I can treat it like this. Suppose I can also, this is the UDL for this portion. Suppose if I continue to have here this one, and also I applied a UDL in the upward direction also. If I apply a UDL in upward and direction, so this will be same, there will be no effect. So I can treat it like this one. So this will be obviously equal to this one. So if I continue to
and also applied UDL for this first portion, the net effect will be like this. For this portion, I have applied a UDL in downward and upward directions. So here I have applied in both directions. So now I can treat it like this. So by this, so this is equal to this. So both are same. So if I take it by another, I can treat it like this. So this is my downward deflection. Suppose it is y1 here, then this will be like this. This deflection due to this will be like this. So I can treat it like this. So इसमें मैंने इस पोर्शन में इधर से इस UDL को इतना ही कंटिन्यू किया, डाउनवर्ड भी लगा दिया. So this will be equal to this one, and this will be equal to this one plus this one. So now my net deflection here YB, that will be equal to this is y2 I can say. So यहाँ पर जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा, this is positive, downward है, and this will be the upward direction. So y1 minus y2 इन दोनों डिफ्लेक्शन का जो डिफरेंस होगा, what will be, that will give the net deflection here. So in this case, slope at, if I want to know the slope at B, then it will be, if I know the slope of, if I want to know the slope of this, then slope will be this one, which is, suppose this is theta B1 or IB1, and minus of this is theta B2 is equal to IB2. So इन दोनों स्लोप का जो डिफरेंस होगा नेट, that will give the net rotation here, and similarly इनका दोनों डिफ्लेक्शंस का नेट जो सम होगा, that will be the net deflection at this. So theta B at a WL upon cube upon 6i, as we know throughout UDL is there, यहाँ पर जो रोटेशन होगा that will be WL cube upon 6ei, and इसकी वजह से जो रोटेशन यहाँ पर होगा that will be rotation at this, which will be WL1 cube upon 6ei, क्योंकि ये रोटेशन यहाँ से यहाँ तक लीनियर रहेगा, नो एक्ट लोड इज देयर, सो दिस विल बी कॉन्स्टेंट्स. तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा that will give the net rotation at B. So this will be L, W upon 6i is the common, so L cube minus L1 cube. So this will be my net rotation at B. Similarly, deflection at here YB will be deflection due to this, which will be WL4 upon 8ei, WL this value of the deflection of this value, this deflection will be WL4 upon 8ei. This is the formula, and this minus this one.
So this deflection will be deflection at this end. इसमें माइनस करेंगे. This deflection will be equal to deflection which is common here. So this deflection will be L14 upon 8 EI plus slope of here. This is a WL13 upon 6 EI into this much length, which is L minus L1. So this will be my this deflection. If I subtract this value from this overall deflection, I will get a net deflection B. Finally, I will get this value. So W upon 8 EI I have taken it common. So L4 minus L14 and minus this will be minus W L1 cube upon 6 EI into L minus L1. So this will give my net deflection at B. Another case is, suppose this is a cantilever and there is a point load at the free end. यहाँ पर point load लगा हुआ है W and I have to find out the rotation and deflection at the free end here. मुझे यहाँ IB ये slope and ये deflection YB इस एंड पे निकालनी है. So similarly I can derive it. Suppose मैंने यहाँ से फ्री फिक्स एंड से x डिस्टेंस इस पॉइंट पे मैंने इसको कंसीडर किया at x. This is my deflection and my slope this slope is dy upon dx. This is the slope. So यहाँ पर अगर मैं इसको तो my formula is EI d square y upon dx square is equal to minus m. This will be minus और यहाँ पर जो मोमेंट होगा that's m और ये m जो है that will be sagging. So but इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा यहाँ पर this will be w into this much length. So this w into L minus this x. Since it is hogging, so it will be negative. So finally it will be positive w L minus x. This will be my moment here. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा so EI dy upon dx will be equal to w capital L minus x square by 2 and this will be coefficient of this x will be minus plus C1. Now at x is equal to 0 at this end, at x is equal to 0, my this slope dy upon dx is 0. This slope is 0 here. So this will become 0 and this will be minus w L square by 2 plus C1. The value of C1 will be plus w L square by 2. If I put the value of C1 here, I will get EI dy upon dx is equal to minus w L minus x square by 2 plus this w L square by 2. So this will my slope equation. This will be my slope equation. This one I will get this. So with this slope at any point x I can find out. If I integrate it further, मैं इसको further integrate करूँगा, so I will get EI into y is equal to w L minus x cube upon 3. So 3 into 2 will become 6 and coefficient of this will be minus and minus minus it will be plus w L square by 2 into x plus C2. So at x is equal to 0 means x is 0 here, this is a fixed end, x is 0, deflection is also y is also equal to 0, deflection 0 here. So इसमें अगर मैं 0 put करता हूँ, if I put 0 here, I will get plus w L cube upon 6 and this will be 0 plus C2. My C2 will be minus w L cube upon 6. If I put the value of C2 in this equation, I will get EI y is equal to w
L minus x cube upon 6 plus WL square upon 2 into x plus C2. C2 is equal to minus WL cube upon 6. So this will be my equation for deflection. ये deflection equation आ जाएगा. This will be with this deflection at any point I can find out. मुझे फिक्स फ्री एंड पे यहां पर डिफ्लेक्शन निकालना है दिस, एंड यहां पर रोटेशन निकालना है. So for this, at x is equal to L, this is L. When x become L, so x की value L, if I put in my slope equation, is in this equation, this is my slope equation, इसमें x की वैल्यू L मैं पुट करूंगा यहाँ पर, सो वो मुझे स्लोप देगा एट बी एंड पे. यहाँ x पुट करेंगे, दिस विल बी 0, ओनली WL स्क्वायर बाई 2 आएगा उसमें, तो दिस विल बी WL स्क्वायर बाई 2. देन IB इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 2 इंटू EI. सो दिस विल बी माई स्लोप इक्वेशन. ये स्लोप मिल जाएगा, दिस स्लोप theta b or IB, I can say slope at b is equal to WL square upon 2EI, and x is equal to L. if I put in my this equation में अगर मैं x is equal to L पुट करूंगा, वो उससे मुझे डिफ्लेक्शन मिलेगा. so EI into y will be, this term will be 0, and this will be WL square by 2 into L minus WL cube upon 6. So it will be 6 WL cube, this will be 3 minus 1, so 2 by 6, this will be 2 by 6 WL cube, so WL cube upon 3 I will get. So EI into y is equal to WL cube upon 3. So y will be WL cube upon 3 EI. So this will be my deflection at this end. So इस केस में अगर ये पॉइंट लोड कैंटिलीवर में यहाँ लगा हुआ है, एंड यहाँ पर जो इस एंड पे जो थीटा है, दिस थीटा बी या आई बी, आई कैन से दिस विल बी WL स्क्वायर अपॉन 2EI, एंड यहाँ पर जो रोटेशन होगा, दिस स्लोप जो होगा यहाँ पर, सॉरी जो डिफ्लेक्शन होगा, दैट विल बी WL क्यूब अपॉन 3EI. ये इस केस में ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए. सो वी शुड रिमेंबर इट frequently. And in case of UDL, as I derived earlier, so if this is UDL, so in this case यहाँ पर जो स्लोप होगा, this will be theta b or IB is equal to WL cube upon 6EI, and this deflection will be WL4 upon 8EI. So UDL के केस में ये फार्मूला लगेगा स्लोप डिफ्लेक्शन का, एंड केस ऑफ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड दिस. Suppose this point load is not at the free end, it is somewhere here, intermediate यहाँ पर लगा हुआ है. तो इस केस में अगर मुझे यहाँ पर निकालना है डिफ्लेक्शन, so I can find, so my deflected shape will be like this, and for this portion it will be parabolic here, and after from this will be a straight line. So अगर मुझे यहाँ पर स्लोप निकालना है, तो दिस ड्यू टू ये स्ट्रेट लाइन है, तो यू जो सी पॉइंट पे जो स्लोप होगा दैट विल बी कांस्टेंट. तो दिस स्लोप आई सी इज इक्वल टू आई बी, स्लोप एट सी इज इक्वल टू स्लोप एट बी, एंड डिफ्लेक्शन, दिस डिफ्लेक्शन वाई बी विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट वाई सी, this YC plus this much deflection, and this deflection will be this slope into this much length, IC into this length. This length will be L minus L1. So my deflection YB will be equal to YC,
and YC deflection at here is equal to WL1 cube upon 8 EI. WL1 cube upon 8 EI. This will be my deflection at here, plus this deflection will be this slope into this much length, and this slope here is equal to WL1 square upon 2 EI. This is the slope here into this much length, L minus L1. If I add both the value, I will get total deflection at B. इससे मुझे टोटल डिफ्लेक्शन यहाँ B पॉइंट पे मिल जाएगा. So this is for slope and this is for deflection. So this slope will be continuous here due to this linear portion, due to this straight line, and this deflection will be this much deflection plus this slope into this much length. Next is cantilever with several point load and cantilever with UDL and point load. Suppose I have a cantilever, so इसमें UDL लगा हुआ है प्लस इसमें point load यहाँ लगा. If I have to know the deflection here, so उसमें principle of superposition I can say means this plus this one plus this one. So I can calculate the deflection by separating into different parts. So principle of superposition से हम इसका total इसको deflection निकाल सकते हैं. So slope deflection at any point can be found by the method of superposition. Hence deflection at any point will be equal to the algebraic sum of the deflection at that point due to point load. अगर मान लीजिए ये UDL यहाँ से ऐसा लगा हुआ होगा and यहाँ लोड है, यहाँ लोड है, so that also I can say like this plus this load plus deflection due to this load. So with the help of principle of superposition I can solve this problem. Now there is a simply supported beam. So far I have discussed the cantilever. Now it is simply supported beam and having a central load, point load यहाँ पर load लगा है, and I have to find out the deflection and slope. So this simply supported beam will deflect like this. So this is my deflected shape. In this case my rotation will be maximum here. So as I move on the deflection, जैसे जैसे मैं x मूव करूँगा इसका जो slope है that will be, ये कम होता चला जाएगा, and finally this slope will be 0 here. Again it will increase but that will be in the opposite direction. So rotation यहाँ पर clockwise है, यहाँ पर rotation minus है, ये anti clockwise है. So यहाँ पर जहाँ पर deflection जो मेरा maximum होगा that will be at the center. This center load यहाँ पर YC आएगा, deflection at this will be maximum. और यहाँ पर जो slope होगा, if I draw a tangent, this tangent will be parallel to this line. It means यहाँ पर when x is equal to this half of L, my slope dy upon dx, yeah I can see slope at IC will be 0. Secondly यहाँ पर और यहाँ पर इन दो पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, my deflection at A and B is equal to 0. So यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 होगा and मैक्सिमम जो रोटेशन होगा that will be at the ends. So इस केस में अगर मुझे इसको एनालिसिस करना है, so I can say, suppose मैंने यहाँ पर x डिस्टेंस पे अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, it will be EI into d square y upon dx square is equal to minus m, and this will be minus m. यहाँ पर क्या होगा, this w, so reaction at both the end will be half of this will be w by 2, this will be w by 2. So यहाँ पर मोमेंट क्या आएगा, that will be sagging, इसकी वजह से sagging मोमेंट आएगा, means okay I taken already positive, so w by 2 into this much length, so ये मेरा यहाँ मोमेंट देगा, so it will be minus w by 2 into x,
अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो इट विल बी ई आई इंटू डेरिवेटिव वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कोफिशिएंट. So this is for slope. When x is equal to 0, or I can say when x is equal to L by 2, जब ये x की वैल्यू सेंटर में यहाँ होगी तो मेरा यहाँ पर स्लोप 0 है. So when x is equal to L by 2, my slope is 0. So यहाँ 0 पुट करेंगे and W by 4 into L by 2 स्क्वेयर करेंगे. So इसे C1 मिल जाएगा. My C1 will be plus W L square upon 16. इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा W L square upon 16, so ये मेरी स्लोप इक्वेशन मिल जाएगी. So this will be my स्लोप इक्वेशन. अगर मैं उसको फर्दर इंटीग्रेट करता हूँ इस स्लोप इक्वेशन को, सो दैट विल आई विल गेट ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 12 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वेयर अपॉन 16 इंटू एक्स प्लस C2. Here when x is equal to 0, this was my case. So x0 is here. When x is equal to 0 means at this end. When x is 0, my this y deflection here is 0. So अगर मैं यहाँ x0 पुट करता हूँ तो ये y भी 0 हो जाएगा. So this will be 0. This will be 0 plus C2. Means C2 will be 0. It means अगर मैं C2 की 0 वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, so this will be my डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगी ये. सो दिस इज माय डिफ्लेक्शन इक्वेशन. सो एंड दिस इज माय स्लोप इक्वेशन. स्लोप मुझे यहाँ पर दिस वाई सी सेंटर पे यहाँ वाई सी निकालना है. दिस वाई सी की वैल्यू विच इज वाई मैक्स आल्सो. अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू इन माई डिफ्लेक्शन इक्वेशंस. इसमें इस इक्वेशन में अगर मैं x इज इक्वल टू एल बाई टू पुट करता हूं, माई x इज इक्वल टू एल बाई टू हेयर, सो ये वाई सी मिल जाएगा. सो एट x इज इक्वल टू वाई, वाई सी इज इक्वल टू वाई मैक्स. दिस विल बी ई आई into y max and this will be equal to minus w upon 12 and x cube means l by 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस w l square upon 16 into l by 2. So this will be w l cube upon 8 into 12 96. This will be w l cube upon 32. So this will be WL cube 96. So this will be WL cube upon 4 upon, this will be 4 upon 96 means 24. So this will be my no, this value is minus. This is minus here. So obviously this will be minus. So it will be 2. 3 plus 2. So 2 divided by 96 will be 1 upon 4, 48. So this EY max will be equal to WL cube upon 48. So if I add, this Y max will be equal to WL cube upon 48 EI. So this WL cube upon 48 I, this will give my deflection at this point. So in case of central point loaded and simply supported beam, my maximum deflection YC is equal to WL cube upon 48 I. This needs to be
रिमेंबर फ्रीक्वेंटली, सो यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मेरा ये आएगा। एंड यहाँ पर अगर मुझे रोटेशन निकालना है आई ए, ड्यू टू सिमेट्री आई ए इज इक्वल टू आई बी, बोथ आर इक्वल बट आर, if this is IB, my IB will be, since it is anti-clockwise, it will be minus IA। और यहाँ पर रोटेशन अगर मुझे निकालना है तो I will put the value of x is equal to 0 in my slope equation। इस स्लोप इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा यहाँ पर, so that way I will get slope, यहाँ का स्लोप मिल जाएगा EI into slope at this will be equal to, this will be 0, so this will be WL square upon 16। So slope at A means theta at A rotation, that will be WL square upon 16 into EI। So ये मेरा फार्मूला हो जाएगा WL square upon 16 EI। इधर यहाँ रोटेशन क्योंकि एक क्लॉकवाइज है तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस रोटेशन इज positive and this rotation is opposite, so it will be minus, so WL square upon 16 EI। so it means in case of a simply supported beam, अगर सेंट्रल लोड यहाँ है तो यहाँ पर जो रोटेशन होगा obviously both are equal, this rotation will be equal to W into this much length L स्क्वायर अपॉन 16 EI। और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगी YC, वो जो YC या YC मैक्स, दैट विल बी ऑब्वियसली एट द लोड WL क्यूब अपॉन 48 EI। ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 16 48। सो दिस इज माय फार्मूला। देन अनदर केस इज दैट सपोज अगर मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें UDL लगा हुआ है, इन दिस केस अगर मुझे उसको एनालाइज करना है, सो माय डिफ्लेक्शन शेप विल बी लाइक दिस, दिस इज माय डिफ्लेक्शन शेप, एंड ड्यू टू सिमेट्री दिस स्लोप इज 0 here, so when x is equal to L by 2, my this slope dy upon dx is equal to 0, here x is equal to 0, so my deflection is also 0, when x is equal to L, my this deflection is also equal to 0 here, so my maximum deflection is here, so my differential equation, obviously reaction will be WL by 2 at both the end, so this is my reactions WL by 2, so EI into second derivative y with respect to x square is equal to minus of m, minus and m will be इस x डिस्टेंस पे जहां पर मैंने इसको स्टार्ट किया यहाँ से, ड्यू टू सिमेट्री दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस, सो आई एम टेकिंग दिस पोर्शन। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, दैट विल बी WL by 2 इज द रिएक्शन इनटू दिस मच डिस्टेंस माइनस WX by स्क्वायर by 2, सो ये सेगिंग होगा। सो ये मेरा इक्वेशन होगा, दिस विल बी फाइनली WL by 2 इंटू x प्लस WX स्क्वायर by 2। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, सो आई विल गेट EI dy अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस WL by 2 इंटू x स्क्वायर by 2 प्लस WX क्यूब अपॉन 6 प्लस कोफिशिएंट C1। सो व्हेन x इज इक्वल टू L by 2, यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ पर स्लोप 0 है, सो x की वैल्यू L by 2 मैं यहाँ पुट करूंगा, सो दिस विल बिकम 0, सो 0 इज इक्वल टू माइनस WL by 4 इंटू L by 2 यहाँ पुट करेंगे प्लस W by 6 L by 2 इंटू क्यूब, इससे मेरा कोफिशिएंट C1 निकल जाएगा। दिस C1 विल बी WL क्यूब अपॉन 24 है। उस C1 की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे यहाँ, सो उससे मेरा स्लोप इक्वेशन मिल जाएगा, दिस इज EI dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस WL by 4 इंटू x स्क्वायर प्लस W by 6 x क्यूब प्लस WL क्यूब by 24। सो ये मेरी स्लोप इक्वेशन है। इस इक्वेशन से मैं कहीं भी स्लोप निकाल सकता हूं, एंड अगर मैं उसको फर्दर इंटीग्रेट करता हूं, सो इट विल बिकम EI इंटू y इज इक्वल टू माइनस WL by 4 x क्यूब अपॉन 3 प्लस W अपॉन 6 S4 by 4 प्लस WL क्यूब अपॉन 24 इंटू x प्लस कोफिशिएंट C2, and at x is equal to 0 my deflection is 0। यहाँ x जब 0 है तो यहाँ डिफ्लेक्शन y is equal to 0 है,
So I will put x is equal to 0 in this equation. So this will be 0, this will be 0 plus 0 plus 0. So C2 will be 0. C2 की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे. So ये आ जाएगा EI इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस WL एक्स क्यूब अपॉन 12 प्लस WX4 अपॉन 24 प्लस WL क्यूब अपॉन 24 इंटू एक्स. सो ये मेरी डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल गई है मुझे. अब मान लीजिए अगर मुझे रोटेशन यहाँ निकालना है, माई बीम इज लाइक दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज C. अगर मुझे यहाँ रोटेशन निकालना है, दिस इज थीटा A, आई कैन से स्लोप एट A. अगर मुझे ये फाइंड करना है, सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 हेयर इन दिस इक्वेशन में. जब मैं 0 पुट करूंगा तो दिस विल बिकम EI into dy upon dx means slope at A is equal to this will be 0 plus 0 WL cube upon 24. So my this slope will be WL cube upon 24 into EI. इससे मेरा यहाँ का स्लोप मिल जाएगा, this one. So this will be my slope at A, and slope at A is equal to slope at B, but of opposite nature. So this IB slope at B will be minus of this WL cube upon 24 EI. So यहाँ का स्लोप मिल जाएगा. प्लस अगर मुझे यहाँ का डिफ्लेक्शन निकालना है, दिस इज YC सेंटर में, तो दिस डिफ्लेक्शन YC इज इक्वल टू Y मैक्स. उसके लिए आई विल पुट दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू L/2. L/2 x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन में. सो आई विल गेट डिफ्लेक्शन एट C विच इज Y मैक्स. तो इस इक्वेशन में L/2 अगर हम पुट करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन, सो दिस विल बी WL/12 इंटू L/2 क्यूब प्लस W अपॉन 24 इंटू L/2 का रेज टू द पावर 4 प्लस WL क्यूब अपॉन 24 इंटू L/2. सो ये मुझे मिल जाएगा. नाउ अगर इसमें 1/EI अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ, आई विल गेट माइनस WL 4 अपॉन 96, दिस विल बी 8 इंटू 12, दिस विल बी 16 इंटू दिस विल बी WL 4 अपॉन दिस विल बी 28. तो फाइनली अगर मैं उसमें WL4 अगर कॉमन लेता हूं, तो आई विल गेट 384. तो दिस विल बी माई -4 प्लस 1 प्लस 8. सो 8 प्लस 1 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. सो 5 अपॉन 384 आ जाएगा ये इंटू WL4 अपॉन EI. तो विद दिस ये मेरा डिफ्लेक्शन मिल जाएगा. द डिफ्लेक्शन विल बी दिस मच. सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर दिस विल बी 5/384 WL4 अपॉन EI. सो अगर UDL है उस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये होगा, और यहाँ पर जो रोटेशन होगा दिस IA दिस विल बी WL क्यूब अपॉन 24 EI. ये यहाँ का स्लोप देगा दिस मच. सो दिस इज द केस ऑफ UDL of a simply supported beam. Another case is, suppose this load is not acting at the center, it is somewhere here. अगर ये मान लीजिए पॉइंट लोड W मेरा यहाँ C लगा हुआ है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ A. इस एंड से ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है. दिस इज माई सिंपली सपोर्टेड बीम. माई W weight is acting here. So this is A from here and B from here. This is my deflection shape, deflected shape. मुझे यहाँ X पॉइंट पे मान लीजिए
इसका डिफ्लेक्शन निकालना है विच इज y. सो फॉर दैट y max विल बी समवेयर हेयर, क्योंकि मेरा ये लोड इसकी डिफ्लेक्शन शेप कुछ इस तरह की रहेगी. So this portion is less than this A. When this A becomes more than this, so my deflection will be in this portion, AC portion. So it will be here in this AC portion somewhere. So ये maximum यहाँ रहेगा, और यहाँ का जो C point पे deflection होगा under the point load, that will be YC. So इसको analysis करने के लिए कैसे करेंगे? This is the center. This is not at the Y max. This is somewhere here. Not exactly at the maximum. So suppose this is my center, L by 2, L by 2. So यहाँ पर मोमेंट अगर मुझे लेना है, my equation is EI into d square y upon dx square is equal to minus m. So यहाँ पर मोमेंट क्या होगा? My reaction here it will be WB upon L. This reaction is WA upon L. So यहाँ पर अगर मैं मोमेंट लेता हूँ तो this will be W B अपॉन एल इंटू दिस एक्स, क्योंकि ये सैगिंग है तो ये पॉजिटिव रहेगा. सो ये मेरा इक्वेशन मिल जाएगा. दिस विल बी सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं बोथ साइड, सो आई विल गेट माइनस डब्ल्यू बी अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कोफिशिएंट C1. सो ई आई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस डब्ल्यू बी अपॉन 2L इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये मिल जाएगा मुझे. अगर मैं इसको फर्दर इंटीग्रेट करता हूं तो आई विल गेट ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन एल इंटू एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस C1 एक्स इंटू C2. ये दो इक्वेशन मिलेंगे. नाउ एट x इज इक्वल टू 0, यहां x जहां पर x इज इक्वल टू 0 है, माई डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू 0. सो इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू जैसे 0 पुट करता हूं, दिस विल बी माई y, दिस विल बी 0. सो इससे मैं ये 0 हो जाएगा प्लस दिस 0 प्लस दिस 0. सो C2 विल बी 0. सो ये मेरी इक्वेशन, जब मैं C2 की वैल्यू 0 यहां पुट करूंगा, सो ये मेरी डिफ्लेक्शन इक्वेशन ये रह जाएगी. सो दिस इज माई डिफ्लेक्शन इक्वेशन. व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x मतलब जब ये x, व्हेन x जब ये इस लोड को क्रॉस करके यहां पर आ जाएगा x, सपोज, तो यहां पर जब x इंक्रीज होकर यहां मूव करेगा, इस पोर्शन CB पोर्शन में आएगा, तो यहां पर मोमेंट क्या होगा? दैट विल बी, यहां पर जो मोमेंट होगा WB अपॉन L दिस इंटू एक्स, सो ई आई इंटू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, बोथ पोर्शन को हम डिफरेंटली एनालिसिस कर रहे हैं, विल बी माइनस m एंड दिस विल बी, दिस इज सैगिंग, माइनस दिस W इंटू एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा यहाँ पर. इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो WB अपॉन L इंटू एक्स प्लस W इंटू एक्स माइनस ए. आई एम टेकिंग बोथ दी पोर्शन सेपरेटली. मैंने पहले AC पोर्शन को लिया, अभी मैं CB पोर्शन को ले रहा हूं. सो दिस इज फॉर x इज इक्वल टू लेस देन a, मतलब इन दिस पोर्शन ये मेरी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गई इसके लिए. दिस एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन a, मतलब this is A, this is B. When x is here, then EI into dy is second derivative y with respect to x square is equal to, here it will be, this is WB upon L into this x minus, so अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, I will get WB upon L x square by 2 plus WX minus A square by 2 into coefficient 3, C3 आएगा. अगर इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे इस पोर्शन, वो आई टेकिंग बोथ दी पर्सन सेपरेटली, सो इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, आई विल गेट WB अपॉन L एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस WX माइनस A क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 6 प्लस C3x प्लस C4.
अब इसके केस में क्या है, व्हेन x बिकम्स, जब ये x यहां पर आ जाएगा, व्हेन x बिकम वैल्यू इस एंड पे आएगा यहां पर, तो यहां डिफ्लेक्शन मेरा 0 है। व्हेन x इज इक्वल टू l, दिस y इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यू जब मैं l पुट करूंगा यहां पर, सो आई विल गेट व्हेन x इज इक्वल टू l, y इज इक्वल टू 0। सो उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैं जब x की वैल्यू l पुट करूंगा यहां पर, सो आई विल गेट 0 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी अपॉन l इंटू l क्यूब अपॉन 6 प्लस w, दिस विल बी l माइनस a मीन्स b, l माइनस a इज इक्वल टू b अपॉन 6 प्लस C3l and plus C4, and also यहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा so yes, so this is my C. So in this case, इस सी पॉइंट पे अंडर द लोड यहां पर जो स्लोप अगर मैं यहां पर निकालूंगा फ्रॉम दिस पोर्शन, अगर मैं इस पोर्शन से यहां पर स्लोप निकालता हूं या इस पोर्शन से जो स्लोप निकालता हूं, दैट स्लोप I see when x is equal to a, then I see for the two part of the beam should be equal when x is equal to a। तो मैं x की वैल्यू a पुट करता हूं, अगर मैं इस पोर्शन में, इस इक्वेशन में जो स्लोप की ये इक्वेशन है, इसमें माय स्लोप इक्वेशन इज दिस वन, मैं x की वैल्यू अगर मैं यहां पर व्हेन x की वैल्यू a पुट करता हूं, then dy upon dx is equal to IC for the two part of the beam should be equal। so x की वैल्यू अगर मैं यहां पर a पुट करता हूं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, so I will get this one, and उसमें बोथ साइड में, दोनों ही इक्वेशन में, for CB portion also, this CB portion when x is greater than a, this is my slope equation। so this is my for CB portion में slope equation मेरी ये है। यहाँ पर मैं x की वैल्यू यहाँ पर a पुट करता हूँ, so obviously this will be slope at C, this will be WB upon L into a square by 2 plus this will be 0 plus C3। तो इससे यहाँ का स्लोप मिल जाएगा। so this slope from this equation is equal to slope from this equation। both portion के लिए जो स्लोप आएगा ऐसी, क्योंकि वो स्लोप वहाँ सेम है, तो इसको दोनों को इक्वल करेंगे, तो इससे मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगी C1 is equal to C3। secondly, when x is equal to a, the deflection should be equal for the two part। this is a, this is b। so यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा ये C पॉइंट पे, चाहे मैं इस पार्ट से डिफ्लेक्शन निकालूं, इस पोर्शन से, इस इक्वेशन की, इस पोर्शन से, इस पोर्शन की वजह से यहाँ जो डिफ्लेक्शन निकालूंगा इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से निकालूंगा, वो डिफ्लेक्शन मेरी दोनों इक्वेशन से सेम होनी चाहिए। सो इस पोर्शन में जो मेरा x, पहला पोर्शन AC पोर्शन का जो मेरा
स्लोप इक्वेशन है, दिस इज द स्लोप इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सो इसमें x की वैल्यू अगर मैं a पुट करता हूं, सो आई विल गेट माइनस डब्ल्यू अपॉन एल ए क्यूब अपॉन सी प्लस C1 इंटू ए, ये मिल जाएगा मुझे। एंड इफ आई पुट x इज इक्वल टू a इन माई सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर, सो आई विल गेट दिस विल बी 0 माइनस डब्ल्यू अपॉन एल इंटू ए क्यूब अपॉन 6 प्लस C3 इंटू ए प्लस C4, ये मिल जाएगा मुझे। सो इससे क्या होगा, दिस एंड दिस विल कैंसल ईच अदर एंड C4 because C1 is equal to C3, so these will also cancel each other, C4 will be equal to 0 and when x is equal to L, my y is 0 from equation this। इस एंड पे जहां ये लोड W है, इस एंड पे A B, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज L। सो ये x जब यहां से मूव करके यहां पहुंचेगा x इक्वल टू L, यहां पर डिफ्लेक्शन मेरी 0 है। सो आई कैन पुट माई x इज इक्वल टू L, इसमें x की L पुट करेंगे हम L, सो ये मेरी y 0 हो जाएगी। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 0 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी अपॉन एल इंटू एल क्यूब अपॉन 6 प्लस डब्ल्यू, दिस विल बी L माइनस a means L minus a is equal to b, so I can say W b cube upon 6 plus my C3 into L and C4 is 0। so इससे मेरे को C3 मिल जाएगा इस इक्वेशन से। with this I will get C3 and C3 is obviously equal to C1, so C1 and C3, these are the C1 is equal to C3 and C4 is equal to 0। so अगर मैं C2 is also equal to 0, so ये सारी वैल्यू अगर मैं अपनी स्लोप इक्वेशंस में एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस में मैं पुट करता हूँ, so I will get these equation, this is equation number 1 2 3 and 4। सो ये इस पोर्शन में दिस इज माई, व्हेन x इज इक्वल टू लेस देन a, तो ये स्लोप इक्वेशन है। इन दिस इक्वेशन अगर मैं C1 की वैल्यू पुट करूंगा, सो आई विल गेट दिस वन, माई C1 इज दिस, C1 इज इक्वल टू C3, तो C1 की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं इसमें, सो इट विल बी दिस वन and my deflection equation will be इसमें C1, इस इक्वेशन में C1 की वैल्यू पुट करता हूं जिसमें, so finally I will get these 4 equations। this is for portion ax is equal to less than a and when x is greater than a, means this is my beam, this is the load W, this distance is a, this is b, this is a and this is b, my deflection curve will be this, so this y max will be somewhere here in this portion, deflection at this is yc। so इस portion के लिए when x is equal to this a, इस portion ac portion के लिए when x is less than a, this is my slope and deflection equations। when x is more than a means for this cb portion, उसके लिए ये 2 equations हैं। from these 4 equations slope and deflection at any point can be found। suppose मुझे slope, यहां पर slope ia and ib ये निकालना मुझे, slope at this and slope at b। तो what I will get, जब मैं x की वैल्यू 0
x इज इक्वल 0 यहाँ पुट करता हूँ फॉर दिस पोर्शन, इस पोर्शन के लिए स्लोप, इस पोर्शन के लिए दिस इज माई स्लोप इक्वेशन। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, सो आई विल गेट स्लोप एट दिस वन। स्लोप एट दिस मीन्स x की वैल्यू इसमें मैं 0 पुट करता हूं तो आई विल गेट WB अपॉन 6L L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दिस विल बी 0। एंड व्हेन x की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, व्हेन x इज इक्वल टू L x, तो यहां का स्लोप मिल जाएगा इसमें। सो EI इंटू स्लोप एट B विल बी इक्वल टू WB अपॉन 6L L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर minus 3L square, this will be W by 2 L minus A, so L minus A square means B square, so इससे यहाँ का स्लोप मिल जाएगा and this slope will be this one। so finally इसको सोल्व करेंगे, so I will get दिस वन। तो ये स्लोप यहाँ का स्लोप मिल जाएगा मुझे WAB L प्लस A इंटू डिवाइडेड बाय 6EIL। स्लोप एट A इज इक्वल टू दिस मच। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, so this will be my slope at here। so slope at this is, I can also write it in this way, WB upon 6IL L square minus B square is equal to L plus B into L minus B। so L minus B here is equal to basically A, so I can see WA into B into L plus B upon 6EIL, and similarly this is WAB L plus A into 6EIL, means इस केस में तो यहां का स्लोप होगा IA, दैट विल बी WAB अपॉन 6EIL, दिस इज A, दिस इज B और दिस इज L। उसमें यहां का स्लोप अगर मुझे निकालना है तो L प्लस दिस मच लेंथ, एंड अगर यहाँ का स्लोप निकालना है ऑब्वियसली दिस विल बी माइनस W इंटू AB। इस केस में L प्लस दिस हो जाएगा, दिस वन अपोजिट L प्लस A अपॉन 6EI इंटू L। सो इससे स्लोप मिल जाएगा मुझे। अगर मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली विल बी so maximum deflection will be in this portion। इस पोर्शन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा AC पोर्शन, मींस व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन x इज लेस देन A, इस पोर्शन में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पर। इट मींस व्हेन x इज इक्वल टू लेस देन A, तो मुझे जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन होगी, जो फर्स्ट केस में डिफ्लेक्शन इक्वेशन होगी, इन दिस केस ये अप्लीकेबल होगी इस केस में। सो व्हेन x, in this case deflection equation is this one, sorry this one, so this is the deflection equation when x is equal to less than A। so for maximum deflections the slope will be 0 here। जहां पर भी maximum deflection आएगी वहां पर dy upon dx the slope will be 0। तो इसको अगर हम 0 पुट करते हैं, मीन्स इसको अगर हम 0 पुट करते हैं this one, so I will get L square minus B square minus 3x square is equal to 0, means this is equal to this one, and x is equal to L square minus B square divided by 3, इसका रूट हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहां पर होगा उस पॉइंट को बताएगा। सो x is equal to L square minus B square by 3। इस x की वैल्यू, इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन में पुट ऑफ करते हैं, माई स्लोप इक्वेशन फर्स्ट पोर्शन के लिए ये मेरी स्लोप इक्वेशन है।
अगर इस इक्वेशन में EI इंटू दिस विल बी वाई मैक्स इज इक्वल टू WB अपॉन 6L इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स इज इक्वल टू L स्क्र माइनस बी स्क्र बाई 3, इसका रूट हो जाएगा, एंड दिस विल बी L स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा L स्क्र माइनस बी स्क्र बाई 3. सो दिस विल बी L स्क्र माइनस बी स्क्र बाई 3 को अगर हम कॉमन लेते हैं, सो दिस विल बी 3 माइनस 1, सो ये 2/3 हो जाएगा. दिस विल बी 2/3. सो इट विल बिकम WB अपॉन 6L इंटू this L square minus B square divided by 3 raised to the power 1, and this is half, so it will become 3/2 हो जाएगा, into this will be 2/3. so यहाँ 2/3 अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं इसको, so it will becomes WB अपॉन 9 into L square minus B square by 3 का 3/2, and this y max will become WB upon 9 EI no 9, this will be 9 EI into L square minus B square by 3 का raised to the power 3/2. ये y max मिल जाएगा इससे हमें. so this will be my y max, this y max ये मिल जाएगा हमें. दिस विल बी, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट डिफ्लेक्शन अंडर द लोड. अगर हम लोड के अंडर ही डिफ्लेक्शन निकालना है मुझे, अंडर द लोड इटसेल्फ, सो इट मीन्स जो मेरी डिफ्लेक्शन इक्वेशंस है, सो माई अगर मुझे यहाँ डिफ्लेक्शन निकालना है अंडर द लोड, सो एक्स की वैल्यू a, वी विल पुट x इज इक्वल टू a इन आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसमें x की वैल्यू a पुट करते हैं हम यहाँ पर. व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन दिस x बिकम्स इक्वल टू a हेयर, इससे मेरा डिफ्लेक्शन अंडर द लोड मिल जाएगा. सो व्हेन x बिकम्स इक्वल टू a, आई विल गेट दिस इक्वेशन. सो दिस इज माई डिफ्लेक्शन इक्वेशन. आई विल गेट सो इस इक्वेशन में अगर हम EI इंटू दिस विल बी YC डिफ्लेक्शन अंडर द लोड इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में हम A पुट कर देंगे WB अपॉन 6L, x की जगह A इंटू L स्क्र माइनस B स्क्र माइनस A स्क्र. सो ये मुझे मिल जाएगा, एंड आई कैन से WB अपॉन 6L इंटू A, इसको मैं L स्क्र माइनस इस B को मैं आई कैन आल्सो से L माइनस A स्क्र. B इज इक्वल टू L माइनस A स्क्र. तो दिस विल बी WBA अपॉन 6L इंटू L स्क्र माइनस A स्क्र प्लस 2LA माइनस A स्क्र, ये मिल जाएगा हमें. एंड दिस विल कैंसिल ईच अदर, and this will be I will get 2LA minus A square into WAB upon 6L, and if I suppose अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं, this will be A, so 2L minus A upon WAB upon 6L. So I will get this one L square minus B square upon A square. So B की जगह L minus A लिखा मैंने, L square minus A square. So this will cancel each other. So this will 2LA minus 2A square, and finally I will get इसमें
दिस इज -2a स्क्वायर. सो इसमें अगर हम a कॉमन लेते हैं, इसमें 2a कॉमन लिया, सो इट विल बिकम्स l माइनस a. तो 2a इंटू l माइनस a इंटू WAB upon 6EIL. So 2 and this will be 3. WAB, this will be WAB. So this A into A square हो जाएगा, and this L minus B is equal to B. So obviously this will be B square W A square B square upon 3EIL. इससे हमें अंडर द लोड डिफ्लेक्शन मिल जाएगा. अगर मुझे मिड स्पैन में डिफ्लेक्शन निकालना है, करता मिड स्पैन, सो x इज इक्वल टू L/2 आई विल पुट इन माई डिफ्लेक्शन इक्वेशंस. जो डिफ्लेक्शन इक्वेशंस है मेरी, दिस इज माई डिफ्लेक्शन इक्वेशन. सो दिस विल बी ऑब्वियसली हेयर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ इस पोर्शन में होगा. तो x इज लेस देन a इस पोर्शन के लिए. अगर इसमें मैं x इज इक्वल टू L/2 यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ L/2 पुट करता हूँ, तो यहाँ का सेंटर का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा. सो दिस विल बी L/2 L square minus B square minus L square by 4. So finally WB upon 12, L and cancel each other. This will be 3L square by 4 minus B square. So WB upon 12, 3L square minus 4B square by 4. So WB upon 12 into 4, 48, 3L square minus 4B square. So ये मेरा सेंटर का डिफ्लेक्शन का फार्मूला हो गया. तो दिस इज सेंटर में डिफ्लेक्शन कैसे आएगी. दिस विल बी WB अपॉन 48 EI. सेंटर मिड स्पैन में WB अपॉन 48 EI इंटू 3L स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर. ये सेंटर का डिफ्लेक्शन बताएगा. अगर मुझे अंडर द लोड डिफ्लेक्शन निकालना है तो दैट विल बी WA स्क्वायर इंटू B स्क्वायर अपॉन 3EIL. अगर मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो उसके लिए ये फार्मूला है. अगर मुझे स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का लोकेशन निकालना कहाँ पर होगा, दैट विल बी दिस वन. स्लोप मेरा B पॉइंट पे ये होगा. दिस B यहाँ पर स्लोप, दिस W, दिस इज A, दिस इज B. सो यहाँ का जो स्लोप होगा IA, दिस विल बी W इंटू AB अपॉन 6EIL into L plus this opposite side, and IB will be minus, obviously this is opposite direction, WAB upon 6EIL. only thing is that इसमें L plus इसका opposite side L plus A हो जाएगा. ये स्लोप देगा. दिस इज द मैक्सिमम लोकेशंस. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का ये फार्मूला है. सो सेंटर पे ये होगा, अंडर द लोड ये होगा, एंड सेंटर पे ये डिफ्लेक्शन आएगी. सो दीज फार्मूला आर रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर. अगर मुझे इस तरह का केस है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और मुझे यहाँ कहीं लोड लगा हो W, ये लोड कहीं भी लग सकता है, इट कैन बी हेयर आल्सो. उससे मुझे दोनों एंड पे स्लोप कितना होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन कितनी होगी, सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितनी होगी, ये किस पॉइंट पे होगा, एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी होगी, ये फार्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं. So this is the case. एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर 20 किलो न्यूटन का लोड लगा है, एंड इन दिस केस दिस डिस्टेंस विच इज A, A इज इक्वल टू 6 मीटर है एंड B इज इक्वल टू 2 मीटर है. ये मेरा सेंटर होगा यहाँ पर D. दिस इज हाफ ऑफ दिस, टोटल लेंथ इज 8 मीटर. तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन अंडर द लोड कितनी होगी इस C पॉइंट पे YC, वो हम फार्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी होगी, उसका फार्मूला हमारा है
एंड सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितना होगा दैट आई नो, एंड रोटेशन एट बोथ द एंड्स, यहाँ पर रोटेशन और यहाँ पर रोटेशन कितना होगा उससे मैं निकाल सकता हूँ. सो फॉर दिस, in this case A is equal to 6 meter, B is equal to 2 meter, my W is 20 kilonewton, and EI is equal to, my E is this much, 2 into 10 raised to the power 5, and this is 6 into 10 raised to the power 8. So EI मेरा मिल जाएगा 12 into 10 raised to the power 13. So only thing is that I have to put the value in my formula which I have derived so far. I will get all the required unknown values. उससे मुझे, अगर मुझे यहाँ का स्लोप एट द लेफ्ट हैंड आई भी निकालना है तो दिस इज माय फार्मूला जो हमने अभी निकाला था इस केस में. दिस इज वाई सी, दिस इज वाई मैक्स, एट सेंटर दिस इज सी, center of the beam, L by 2, L by 2. This portion is A, this is B. So यहाँ का जो रोटेशन है दिस इज आई ए, दिस इज आई बी. आई बी ए का फॉर्मूला जो हमने निकाला था डब्ल्यू ए बी अपॉन 6 ई आई एल इंटू एल प्लस दिस अपोजिट लेंथ. आई बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन 6 ई आई एल इंटू एल प्लस दिस, यहाँ का स्लोप के लिए ये दिस एल प्लस ए, एंड दिस विल बी माइनस क्योंकि ये होगा. इस फार्मूले में अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे उससे मुझे स्लोप मिल जाएगा. माई दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन है इस केस में. सो 20 किलो न्यूटन को, दिस 20 किलो न्यूटन उसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 10 raised to the power 3 इंटू माई दिस लेंथ इज 6 मीटर, दिस इज 2 मीटर. 6 मीटर को हमने mm में कन्वर्ट किया, इस b पोर्शन को 2 मीटर को mm में कन्वर्ट किया इंटू दिस L प्लस B, दिस इज 8 मीटर. सो 8 प्लस दिस B इज 2 एंड दिस मीटर को mm में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 6 EIL. सो EI इज इक्वल टू दिस मच 12 इंटू 10 raised to the power 13, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, एंड L दिस लेंथ 8 मीटर को भी हमने mm में कन्वर्ट किया. सो इन दिस केस 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 3, 10 raised to the power, मतलब 10 raised to the power 12 होगा ये. 10 raised to the power 12, 3 is 12 plus this one. So ये this will cancel each other. 6 and 6 will cancel each other. This is 4, this will be 2. So finally I will get this value. So this will be 4.167 into 10 raised to the power minus 4 रेडियन ही मिल जाएगा. अगर मुझे B में स्लोप निकालना है तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा इसमें. आई विल गेट स्लोप एट B, थीटा B. अब डिफ्लेक्शन अंडर द लोड मुझे निकालना है. सो डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, यहाँ इस लोड पे इस सी पॉइंट मीन्स डिफ्लेक्शन अंडर दिस लोड वाई सी. सो दिस फार्मूला वाज डब्ल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3EIL. ये फार्मूला हमने अभी डिराइव किया था. This is deflection under the load, WA square B square upon 3IL. So इस फार्मूले में जब हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे तो 20 इंटू ए मीन्स W इज 20 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया, A इज 6 मीटर इसको mm में कन्वर्ट किया रेज टू पावर 2 एंड B इज 2 मीटर को mm में कन्वर्ट किया रेज टू पावर 3 अपॉन 3. दिस इज EI एंड दिस लेंथ इज इन mm.
उससे मेरा जो सेंटर पे सी पे अंडर द लोड, ये सी पॉइंट पे जो डब्ल्यू है लोड मेरा, अंडर दिस लोड दिस डिफ्लेक्शन ये वाई सी देगा, दिस वाई सी विल बी 1 mm. सेकेंडली डिफ्लेक्शन अंडर द मिड स्पैन, मिड स्पैन डिफ्लेक्शन हमें निकालना है। तो मिड स्पैन डिफ्लेक्शन यहाँ पर when x is equal to L/2 at the center, this is L is equal to 8 मीटर, मतलब this is 4 मीटर, this is 4 मीटर। जब x की वैल्यू 4 मीटर में पुट करूंगा, ये मेरा फार्मूला यहाँ पर मिड स्पैन में डिफ्लेक्शन का फार्मूला, दिस वाज द माई फार्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया था, WB/48 EI 3L² - 4B²। इससे मेरा ये निकल जाएगा। दिस वन जो सेंटर में डिफ्लेक्शन का ये फार्मूला था। सो इस फार्मूले को हम इन दिस फार्मूला हम कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे, W दिस इज न्यूटन इंटू B, इसको mm में कन्वर्ट किया इंटू 10, L इज इक्वल टू 8 मीटर, इसको mm² माइनस दिस स्क्वायर अपॉन दिस वन। सो इससे मेरा डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.22 mm, ये मिल जाएगा मुझे। एंड अगर मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, उस लोकेशन पे x कहाँ होगा, ये x की वैल्यू का ये फार्मूला था। जहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, दिस इज y max एंड दिस x इज इक्वल टू L² माइनस B²/3, इसका रूट ये हमने निकाला था। ये वैल्यू जब पुट किया तो ये 4.47 मीटर आ जाएगा, मतलब ये 8 मीटर है। तो दिस विल बी सेंटर से ये थोड़ा हटके यहाँ पर 4.472 मीटर यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का दिस वाज माय फार्मूला, ये मेरा फार्मूला था, WB/3IL L² माइनस B²/3/2। इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आई विल गेट 1.242 mm, ये मिल जाएगा मुझे y max। ये y max का फार्मूला है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मेरा आएगा यहाँ पर, दिस इज y max। So y max will be this y max is equal to 1.242 में, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 1.242 मीटर होगी। एंड डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, दिस इज माय मिड स्पैन एंड अंडर द लोड 1 मीटर mm है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है दैट इज 1.242 मीटर, मेरी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है y max, दिस इज माय y max। सो y max इज दिस मच 1.242 एंड इस बीम के मिड पॉइंट में डिफ्लेक्शन 1.22 मीटर है एंड बोथ दी वैल्यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये 1.222 है, ये 1.242 है, मतलब मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है और मिड पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी, अगर ये लोड यहाँ W भी लगा है बट ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मेरा इसी के आसपास होगा, मिड पॉइंट के आसपास ही होगा ये। सो दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस। So this is my example. Another example, a horizontal cantilever of uniform section of length L carries 2-point load W at the free end and 2W at the distance L1 from the free end. इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें निकालना है। इस तरह का केस है, इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये कैंटिलीवर है, यहाँ पर 2W लोड लगा है, यहाँ W लगा है। सो इसका डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह से रहेगा।
दिस विल बी, सो ऑब्वियसली इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी एट द फ्री एंड, कैंटिलीवर है तो वाई मैक्स विल बी हेयर। सो इस वाई मैक्स को निकालने के लिए इसमें 2 पॉइंट लोड लगे हैं, एक यहाँ पर लगा एक यहाँ लगा, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। मतलब आई कैन टेक कि एक कैंटिलीवर ऐसा है जिसमें ये लोड लगा है, इस लोड को 2W प्लस एक दूसरा कैंटिलीवर जिसमें यहाँ लगा, सो मैंने इनको सेपरेटली दिस प्लस दिस कर दिया। सो दिस होल लोडिंग आई हैव अरेंज्ड इन 2 फॉर्म। सो इस लोड को मैंने यहाँ लगा, इसको सेपरेटली कंसीडर किया, प्लस ये कैंटिलीवर है इसमें इस लोड को हटा के ये लोड लगा दिया। सो टोटल डिफ्लेक्शन जो यहाँ पर होगा दैट विल बी डिफ्लेक्शन ऑफ दिस पोर्शन, दिस इज y1 एंड डिफ्लेक्शन ऑफ दिस पोर्शन। मतलब सेपरेटली इस W को यहाँ लगाने की वजह से जो टोटल डिफ्लेक्शन y2 आता एंड यहाँ 2W से जो डिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, तो इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी y1 प्लस y2। ये टोटल डिफ्लेक्शन यहाँ का y मैक्स दे देगा। सो नाउ y1 जो डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी 2W means W into this much length, this is L minus L1, L minus L1 क्यूब अपॉन 3EI, ये फार्मूला है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा प्लस में यहाँ पर जो स्लोप होगा दैट विल बी 2W इज द लोड इनटू L माइनस L1 का स्क्वायर अपॉन 2EI, ये स्लोप का फार्मूला है। इस स्लोप को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे L1 से तो ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो दिस डिफ्लेक्शन प्लस दिस डिफ्लेक्शन, इससे मेरा y1 मिल जाएगा, आई विल गेट दिस y1 प्लस यहाँ y2, दिस y2 ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू, आई विल ऐड दिस वन, ये कैंटिलीवर है इसका, ये फ्री एंड है। सो यहाँ डिफ्लेक्शन क्या होगा W इनटू दिस लेंथ क्यूब अपॉन 3EI, ये मेरा फार्मूला है। सो ये डिफ्लेक्शन और ये डिफ्लेक्शन को दोनों को ऐड कर देंगे, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ मिल जाएगा। सो दिस विल बी YB इज इक्वल टू y, this my y1 plus this is y1. So I will get, after putting all the value here, I will get this W upon 3I L1 cube plus 3L square into L minus L1. Another question is that I have a simply supported beam जिसमें जो UDL लगा है only for the half parts में UDL लगा यहाँ से यहाँ तक, और मुझे इसमें निकालना है डिफ्लेक्शन एट द सेंटर। ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप रहेगी, यहाँ वाई सी मुझे निकालना है। सो वाई सी निकालने के लिए क्या होगा, सपोज अगर मैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा, अगर इस लोड को मैं यहाँ की प्लस के बजाय इस हाफ में यहाँ लगाता हूँ, सो ऑब्वियसली इस केस में भी डिफ्लेक्शन उतना ही होगा जितना यहाँ होगा। मतलब दिस इज माई सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका लेफ्ट पोर्शन क्या, अगर मैं यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा, दिस सपोज दिस इज वाई सी, अगर मैं इस लोड को दिस इज हाफ ऑफ दिस यहाँ की बजाय इस तरह से लगाता हूं, तो इस केस में भी जो डिफ्लेक्शन यहाँ वाई सी है तो यहाँ भी वाई सी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूं तो फाइनली आई विल गेट दिस। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा दैट डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्वियसली, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा दिस इज वाई सी, इसकी वजह से प्लस इस फर्स्ट हाफ की वजह से वाई सी है, इसकी वजह से वाई सी। सो ये दोनों डिफ्लेक्शन अगर मैं ऐड कर दूंगा तो दैट विल बिकम 2yc। मतलब ये हुआ कि अगर ये थ्रू आउट यूडीएल है, सो माई टोटल डिफ्लेक्शन विल बी 2yc। इट मीन्स इस केस में 2yc, तो यहां जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज हाफ ऑफ दिस वन, दिस इज हाफ ऑफ दिस वन, yc इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वन। अगर ये 2yc है तो ये yc है। मीन्स इस केस में जब थ्रू आउट यूडीएल है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो डिफ्लेक्शन होगा, दिस डिफ्लेक्शन दिस इज 2yc एंड 2yc इज इक्वल टू, इन दिस केस अगर ये थ्रू आउट यूडीएल होता तो दैट विल बी 5/384
WL4 अपॉन EI, ये मेरा फार्मूला है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में थ्रू आउट यूडीएल है तो WL/4 अपॉन EI इंटू 5 अपॉन 384। सो इस केस में YC क्या होगा, ये 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, सो इट विल बी 5 अपॉन 368 WL4 अपॉन EI, ये आ जाएगा मेरा। सेंटर में जो डिफ्लेक्शन है दैट विल बी दिस वन। Another question is that a cantilever 2.4 meter long is loaded as shown in find the deflection at the end if the section is a rectangle, this one. So ये मेरा कैंटिलीवर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन है एंड इसमें जो यूडीएल लगा है दिस इज लाइक दिस, this is my E, so E is equal to 0.2 into 10 raised to the power 5 Newton per mm square, एंड जो इसका I हम निकाल सकते हैं BD cube upon 12, this is the width, this is depth, so this is I, so I is दिस में माई I, इससे I निकल गया एंड माई सेक्शन इज लाइक दिस, ये कैंटिलीवर है एंड इसमें यूडीएल जो लगा हुआ मेरा हाफ यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर यूडीएल। सो मुझे यहाँ ये जो डिफ्लेक्शन है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली यहाँ होगी, ये मुझे निकालनी है, दिस Y1, ये डिफ्लेक्शन मुझे निकालनी है। तो दिस डिफ्लेक्शन, दिस आर दी वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ डिफ्लेक्शन निकालने के लिए फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा। सो इस केस में यूडीएल विल बी इक्वल टू आई का, मैं इसको इस तरह से एनालिसिस कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए ये मेरा यूडीएल कंटिन्यू होता है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ एंड दिस पोर्शन में नीचे से भी लोड लगा देता हूँ, so obviously the net effect is equal to 0, it will be same। इसी को मैंने इस तरह से यूडीएल लगा दिया इस पोर्शन में और नीचे से भी यूडीएल लगा दिया, so I can treat it like this। so इस केस में अगर मुझे इसका जो डिफ्लेक्शन होगा इस पोर्शन का I can treat it like this। सेम लोड मैंने इसको कंटिन्यू किया एंड इतना लोड मैंने यहाँ लिया, नेट इफेक्ट इज इक्वल टू 0। फाइनली दिस विल कैंसिल ईच अदर, सो दिस स्ट्रक्चर माई दिस स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू, अब मैं इसका डिफ्लेक्शन अगर मुझे इसका निकालना है आई कैन से माई दिस स्ट्रक्चर, दिस कैंटिलीवर हाफ को इज लाइक दिस, दिस इक्वल टू दिस वन। अब मेरा ऊपर वाला जो यूडीएल है इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कितना होगा, दिस विल बी Y1 सेपरेट अपर पोर्शन के लिए, उसमें से ये डिफ्लेक्टेड शेप होगा, ये मेरा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। नीचे वाला लोड जो है ये है, इसकी वजह से यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा दिस विल बी Y2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर मेरा दिस विल बी, दिस इज डिफ्लेक्शन इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड। सो यहाँ जो नेट डिफ्लेक्शन मेरा होगा दैट विल बी Y1 माइनस Y2, क्योंकि ये लोड ऊपर की तरफ जाएगा और ये लोड इसकी ऊपर वाले के लोड की वजह से ये डिफ्लेक्शन आएगा, नेट डिफ्लेक्शन विल बी Y1 माइनस Y2। सो इसकी वजह से यहाँ जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी, उसका फार्मूला हमारे पास है WL4 अपॉन 8EI, उससे मेरा ये Y1 निकल जाएगा। सो Y1 विल बी W3, ऑब्वियसली न्यूटन mm में भी यही आएगा, इंटू L4, L is 2.4 into 10 raised to power 3, इसको 4 upon 8 into this one, this into this, ये करेंगे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें Y1 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ जो Y2 निकालेंगे, ये Y2 क्या आएगा, आई कैन से कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा ये यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक रहेगा और यहाँ से यहाँ तक ये लीनियर है। तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगी
दिस डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू, वही सेम डिफ्लेक्शन यहाँ होगी, प्लस यहाँ का जो स्लोप आएगा, यहाँ का स्लोप, उस स्लोप को इस लेंथ से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये डिफ्लेक्शन आ जाएगी। सो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है, दिस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू दिस लेंथ इज, सिंस दिस लेंथ इज 1 मीटर, so this will be WL 4/8EI का फार्मूला है। तो इसमें 3 इंटू दिस लेंथ इज 1 मीटर अपॉन 8 EI, जो भी EI वो यहाँ की डिफ्लेक्शन देगा। दिस डिफ्लेक्शन विल, दिस प्लस ये डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर जो स्लोप होगा, दिस स्लोप विल बी WL3/6AI, ये फार्मूला होता है हमारा स्लोप का। सो इसमें W इंटू दिस मच लेंथ, मीटर को mm में कन्वर्ट किया, इंटू 6EI, दिस इज द स्लोप। और इस स्लोप को, ये स्लोप मेरा यहाँ कांस्टेंट रहेगा, इस स्लोप को इस लेंथ से मल्टीप्लाइड करेंगे। दिस लेंथ इज 1.4 मीटर, मीन्स 1.4 इंटू 1000। सो इससे मेरा y2 मिल जाएगा, दिस y2। सो with this equation my y1 is equal to 1.8432 and y2 is equal to this this one। so ये हमारा अपवर्ड रहेगा। इस कैंटिलीवर की वजह से जो हमने निकाला, दिस इज पॉजिटिव ऑब्वियसली। So y1 इज, इस UDL की वजह से ये आएगा, प्लस हाफ ऑफ दिस, ये थ्रू आउट हमने एक्सटेंड किया, इसकी वजह से y2। सो दिस माइनस y दिस। एंड वन मोर थिंग विच आई मिस्ड हेयर, ए पॉइंट लोड इज आल्सो एक्टिंग हेयर, सो इसकी वजह से भी डिफ्लेक्शन होगा। मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस and plus this one, and this deflection will be downward। ये पॉइंट लोड जो फ्री एंड पे लगा है, इसकी वजह से y3, इसका डिफ्लेक्शन that will be WL3/3I, ये फार्मूला, इससे हमारा y3 मिल जाएगा। सिंस y1 एंड y3 आर बोथ डाउनवर्ड्स, सो ये y1 जो है दिस इज डाउनवर्ड, ये y3 भी डाउनवर्ड है, एंड ये वाला अपवर्ड है। सो टोटल डिफ्लेक्शन दैट विल बी होगी वो y1 प्लस y3, दो होता है डाउनवर्ड, एंड दिस विल बी माइनस। सो y1 इज बोथ आर डाउनवर्ड, y1 प्लस y3 एंड माइनस y2। ये हम कर देंगे, इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकालेंगे, y1 इज इक्वल टू दिस मच, दिस इज माई y1 8.43 mm जो भी। सेकेंडली y2 इज इक्वल टू 0.1593, सो दिस इज माई 0.1593, ये अपवर्ड है। एंड y3 इज इक्वल टू 1.3653 mm, दिस इज आल्सो डाउनवर्ड। So this y1 minus this y2 plus this y3, I will get net deflection जो मेरा होगा फ्री एंड पे, दिस विल बी y1 माइनस y2 प्लस y3। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव। सो फाइनली दिस विल बी 3.0492 mm आ जाएगा मेरा टोटल डिफ्लेक्शंस फ्री एंड में। मीन्स इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले इसको UDL को मैंने एक्सटेंड किया, और इस अमाउंट में ऊपर भी UDL लगाया, नीचे भी UDL लगाया। सो इस ऊपर वाले UDL की वजह से इतना डिफ्लेक्शन होगा, माइनस नीचे वाले डिफ्लेक्शन की वजह से अपवर्ड होगा, एंड ये यूनिट लोड जो पॉइंट लोड यहाँ लगा, इसका सेपरेटली मैंने इसको कंसीडर किया। सो फाइनल डिफ्लेक्शन मेरा ये आ गया। अनदर एग्जांपल,
A cantilever of uniform section has a length of AB is equal to L मीटर and B is free and ये cantilever है जिसमें इसकी लेंथ AB is equal to L है and it carries a point load of W here and A is fixed. Find the slope and deflection at point C. इस point C पे मुझे slope and deflection निकालना है जो कि यहाँ से जो है that is L/4 from the free end है. So यहाँ से L/4 है तो obviously this is L, so L minus L by this will be L minus 3L/4. 3L/4 ये यहाँ से हो जाएगा. मुझे यहाँ का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है. सो इट इज वेरी सेम. डिफरेंशियल इक्वेशंस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं. सो फॉर एनी पॉइंट x डिस्टेंस जो भी है मेरा यहाँ से, दिस इज द केस, दिस इज W. नो दिस इज W. तो ये पॉइंट C है, यहाँ पॉइंट C है. दिस इज L/4, दिस इज 3L/4. दिस विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस. तो यहाँ पर मुझे अगर मैं किसी भी एंड पे x पे मुझे मेरी ये इक्वेशन है, यहाँ पर मोमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी वजह से जो मोमेंट होगा दिस विल बी, दिस इज L, दिस इज L. सो ऑब्वियसली ये L माइनस एक्स हो जाएगा, दिस मच पोर्शन. तो दिस विल बी WL माइनस एक्स. एंड क्योंकि ये हॉगिंग मोमेंट होगा तो दिस विल बी माइनस. फाइनली ये माइनस माइनस प्लस WL माइनस एक्स हो जाएगा, EI इंटू d²y/dx². आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल गेट EY dy/dx इज इक्वल टू प्लस WL माइनस x²/2 करेंगे. इसका कोएफिशिएंट माइनस में आएगा तो दिस विल बी माइनस प्लस C1 हो जाएगा. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, when x is equal to 0 my dy/dx is equal to 0. सो इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. दिस विल बी W/2 इंटू L² प्लस C1. ये मेरा C1 की वैल्यू आ जाएगी. इस C1 की वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूँगा W into L minus x. So this will be minus, yes, 2. So this will be minus m WL minus x. So this will be this is WL minus x. So is think WL minus x, and this will be derivative of this will be W into LX minus x²/2 plus C1. When x is equal to 0, my dy/dx is equal to 0. So after putting x is equal to 0 here, I will get C1 is equal to 0. So finally I will get this equation. एंड फर्दर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल गेट दिस वन.
w by 2, this will become lx square by 2 minus x cube upon 6 plus coefficient c2. And when x is equal to 0 means यहाँ x इज इक्वल टू 0 जब है यहाँ पर, तो यहाँ डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हम 0 पुट करेंगे, इसमें x इज इक्वल टू 0, सो दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, सो c2 इज इक्वल टू 0. सो c2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये मेरी, दिस इज माई डिफ्लेक्शन इक्वेशन एंड स्लोप इक्वेशन इज दिस वन. So this is my slope equation. So हमें जो स्लोप निकालना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यहाँ पर निकालना है. x को हमेशा हम यहाँ से मेजर करते हैं, तो इस पॉइंट का यहाँ से x इज इक्वल टू 3l/4 है. सो x की वैल्यू 3l/4 अगर हम पुट करेंगे स्लोप एंड डिफरेंस इक्वेशन, तो यहाँ का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बताएगा. सो x इज इक्वल टू 3/4 अगर हमने इसमें पुट किया तो WL/2 इंटू 3l/4 स्क्वेयर माइनस 1/6 L/3l/4 क्यूब आ जाएगा. सो दिस विल बी W इंटू 9l क्यूब अपॉन दिस विल बी 16 इंटू 232 माइनस दिस विल बी माई 27 अपॉन 64 इंटू 6 दिस. सो नाउ अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं 9l क्यूब अगर हम कॉमन लेते हैं इसमें, सो आई विल गेट 1/32 माइनस 3/384 आ जाएगा एंड दिस विल बी 9WL क्यूब, इसका एलसीएम 384 आएगा. दिस विल बी 12 इंटू माइनस दिस विल बी 3, सो ये 9 आ जाएगा. मीन्स दिस विल बिकम 9WL क्यूब इंटू 9/384 एंड दिस YC, सो EI यहाँ आ जाएगा. सो दिस विल बी माई YC. इसको 3 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3 विल बी 128. सो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 128 EI इंटू WL क्यूब. YC मिल जाएगा इससे मुझे. सो दिस इज माई YC. अगर मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप इक्वेशन जो मेरा है, दिस वाज माय स्लोप इक्वेशन, इसमें x इज इक्वल टू 3l/4 में अगर मैं पुट करता हूँ इसमें तो यहाँ का स्लोप मिल जाएगा. दिस x इज इक्वल टू 3l/4 है. सो इसमें 3l/4 अगर मैं पुट करता हूँ, दिस विल बिकम W इंटू L इंटू 3l/4 माइनस 1/2 3l/4 का स्क्वेयर. इसको कैलकुलेट करेंगे, सो आई विल गेट दिस वन, ये मिल जाएगा एंड दिस विल बी फाइनली 15/32 WL स्क्वेयर, ये मिल जाएगा मुझे. एंड अनदर एग्जांपल, a uniform beam of length L is simply supported and symmetrically supported over a span of, find the ratio of L upon so that the required, ये इस तरह का केस है. ये सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरी, इसके सेंटर में W लोड लगा है एंड इसके बोथ साइड में ओवर हैंग है. दिस पोर्शन इज, ये पोर्शन ओवर हैंग है, ये पोर्शन ओवर हैंग है. दिस इज लाइक दिस. तो ऑब्वियसली जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा. दिस इज ओवरहैंग पोर्शन, तो अंडर दिस लोड इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस. मतलब इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ होगी एंड
यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये जो स्लोप होगा, दिस इज सपोज दिस इज ए बी सी डी, यहाँ जो अगर स्लोप होगा यही स्लोप दिस वन होगा, यहाँ जो स्लोप आई बी होगा तो ये भी आई बी होगा. सो व्हाट ही सेज दैट द रेशियो ऑफ एल अपॉन एल निकालना है मुझे. माई दिस इज कैपिटल एल and this is small l, so obviously this will be l minus l का हाफ हो जाएगा, ये l minus l by 2, l minus l by 2. एंड वो जानना चाह रहा डिफ्लेक्शन एट ईच एंड इक्वल्स द डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन. मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है मिड स्पैन पे, यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन इक्वल टू दिस वन, मीन्स y एट a दिस एंड a पे यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है दिस इज इक्वल टू दिस वन. अगर ये इस केस में दिस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू दिस वन है तो उसमें L अपॉन L की रेशियो क्या होगी, वो दैट वी हैव टू फाइंड. सो L अपॉन स्मॉल दिस L कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, इसका रेशियो हमें निकालना है. सो ऑब्वियसली ये जो डिफ्लेक्शन होगी दिस विल बी, दिस स्लोप विल बी सेम. सपोज ये अगर ये बी पॉइंट, ये स्लोप जो है वही ये स्लोप होगा, एंड दिस स्लोप विल बी इक्वल टू, सिंपली सपोर्टेड के केस में यहां पर जो स्लोप होता है दैट विल बी W इंटू दिस L क्यूब अपॉन 16 EI. ये लेंथ स्मॉल l है, W L क्यूब अपॉन 16 EI. यहाँ पर ये फार्मूला है, ये स्लोप एंड्स पे स्लोप का फार्मूला है. जो ये स्लोप होगा वही ये स्लोप होगा. इस स्लोप को अगर इस लेंथ से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, मीन्स इस स्लोप को L माइनस L बाई 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये डिफ्लेक्शन आएगा. एंड दिस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, यहां पर जो डिफ्लेक्शन होगा सेंटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड के केस में, फॉरगेट अबाउट द ओवरहैंग, यहां जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी W इंटू L क्यूब अपॉन 48 EI. ये फार्मूला होता है. इन दोनों को अगर हम इक्वल कर देंगे तो उससे हमारा ये निकल जाएगा. ऑब्वियसली दिस विल 3 एंड दिस विल बी, ये दोनों कट जाएंगे. सो आई विल गेट L माइनस L बाई 2 इज इक्वल टू 1/3. ये मिल जाएगा मुझे. सो इससे क्या होगा, आई विल गेट 3L माइनस 3L इज इक्वल टू, दिस विल बी, नो दिस विल बी स्क्वायर होगा, दिस विल बी WL स्क्वायर अपॉन 16 EI इंटू, सो दिस विल बी L. So this is L by 3. So 3L minus 3L is equal to 2L हो जाएगा. So 3L is equal to 5L and this will be here. So L is equal to 5 by L को यहाँ ले आएंगे तो 5/3 आ जाएगा. मतलब ये जो L अपॉन स्मॉल l का रेशियो होगा ये 5/3 आ जाएगा. दिस वन, दिस इज व्हाट ही wants to know. This question I have already explained. So this is the end of the lecture. I hope you enjoyed my lecture. So this is our coaching center. We are also providing coaching for IES and GATE, and admission are going on. So anyone who is interested and want to take admission here, he can contact us. So I hope you enjoyed my lecture. Thank you very much. Have a good night. बंद कर दिया.